शुरू करें। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम राम नरेश प्रसाद, एसएससी टीचर ऑफ डेफोडिल स्कूल. टुडे I am going to teach about geography chapter first, our resources. In this chapter, first of all, what is a resources? I want to explain this question in this way. What is a resource? Anything available in our surrounding which are useful or which satisfy our needs is called resources. For determining anything as a resource, there are many factors are responsible for the conversion of anything as a resource. Physical environment, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. कहने का मतलब है कि किसी भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में, वातावरण में जो वस्तुएं हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करने में 3 फैक्टर जिम्मेवार होता है. देयर आर 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग एज ए रिसोर्स. फिजिकल इन्वायरमेंट, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. तो इन दिस वे एनीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which are useful or which satisfy our need is called resources. Next, types of resources. We can classify resources from different point of view, but broadly there are 3 types of resources. First, natural resources. Second, human made resources. Third, human resources. Here I want to explain first of all natural resources. Resources which are created by nature is known as natural resources. For example, sunlight, wind, water, etc. Next, human-made resources. Such resources which are created by human with the help of their skill and technology are known as human-made resources. For example, building, roads, and any means of transportation. Next, human resources. Such resources, example, human beings. Human resources is also a type of resources because the conversion of anything as a resource mainly responsible for this is human being. Human beings have a capacity to convert anything as a resource with the help of technology and skill and knowledge. So in this way, human resource is human being is also a resource in themselves. स्वयं में. कहने का मतलब कि मनुष्य खुद अपने आप में रिसोर्स है. कारण कि किसी भी चीज को कन्वर्ट करने को या डिफाइन करने की जो कैपेसिटी खुद ह्यूमन में ही होता है. इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स अपने आप में भी, ह्यूमन बीइंग जो है अपने आप में भी वो रिसोर्स. नेक्स्ट,
I want to classify natural resources from different point of view. From different point of view. First point of view is on the basis of development and use. In this point of view, there are two types of resources. Natural resources, first point of view of development. In this point of view, there are two types of resources: actual resources and potential resources. Here, first actual resources, such resources which are surveyed properly and are being used at present time properly is known as actual resources. यानी एक्चुअल रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज के कहते हैं जिसकी हमें अच्छी जानकारी है, देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में, और वर्तमान समय में उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट पोटेंशियल रिसोर्सेज, सच रिसोर्सेज which are only know about their existence but we do not know their quality, quantity, and they are not being used at present time. Such resources are called potential resources. For example, solar and wind energy in Rajasthan and Gujarat. These are examples of potential resources. Next, natural resources can be classified on the origin point of view. So, according to origin point of view, there are two types of resources. First, biotic resources, and next, aquatic resources. Aquatic resources means living resources, यानी वैसे रिसोर्स जो लिविंग है और माने सजीव है, वेजिटेशन, एनिमल्स और भी लिविंग थिंग्स, इसको बायोटिक रिसोर्स है। एबोटिक रिसोर्सेज भी नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग रिसोर्सेज। एबोटिक रिसोर्सेज माउंटेन, रिवर, soil, these are example of aquatic resources. Next, natural resources can be classified on the basis of their renewability. So, for the renewability point of view, there are two types of resources. First, renewable resources और next non-renewable resources. सबसे पहले I want to explain renewable resources. Such resources which can be obtained again after using them is called renewable resources. Renewable resources is also called replenishable resources. यानी वैसे रिसोर्स जिसका यूज करने के बाद हम दोबारा उसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, विंड, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सच रिसोर्सेज वी कैन नॉट बी रिप्लेनिशेबल या वी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड आफ्टर यूजिंग देम, नॉन रिसोर्स। For example, coal, petroleum like resources are come under non-renewable resources. Next, natural resources can be classified on the basis of distribution. From distribution point of view, there are two types of natural resources. First, ubiquitous resources और next
इज कॉल्ड ऑब्टिक्यूज रिसोर्स। ऑब्टिक्यूज रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वैसे रिसोर्सेज जो सभी जगह अवेलेबल है, अवेलेबल ऑफ एवरीवेयर, उसको हम ऑब्टिक्यूज रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल wind, sunlight, these are resources, such type of resources are available everywhere. Next है localized resources, such resources which are found only in some certain pockets of certain region. This type of resources are called localized resources. यानी वैसे रिसोर्स जो किसी खास क्षेत्र तक ही सीमित हैं, स्थानीय आधार पर मिलते हैं, उसे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कोल लाइक रिसोर्सेज या कोल मिनरल्स आर फाउंड इन स्पेशलाइज्ड एरिया, पेट्रोलियम फाउंड इन स्पेशलाइज्ड एरिया, माइका is also found in a specialized area. These type of resources are called localized resources. Next, natural resources can be classified in this point as stock type of stock resources. Here stock resources means such resources which are stock resources, a type of actual resources, but they are not being used at present time. They are left for future or future generation, is called stock resources or reserve resources. Next point है resource conservation. Here resource conservation means save our resources, protect our resources, because in this era we are using resources indiscriminately due to growing fast or rapid growing population, fast urbanization, fast industrialization. We are using various resources indiscriminately way. In this way, if in this way, in this tendency, we use resources. Resources would be absent. Resources should be demolished in our kites, in our future, for future generation. Resources would not be left for future generation. And here, resources is essential for any type of development. But on other side resources are being used indiscriminately. So due to these reasons, we have duty to conserve resources. For conserving resources, we can adopt some measures for conserving them, like reducing consumption of the resources. फर्स्ट जो कहने का मतलब है कि रिसोर्स कंजर्वेशन को हम रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हम कुछ मेजर्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला है कि फर्स्ट मेजर है रिड्यूसिंग कंजप्शन, जो हमारा जो खपत है, खपत की दर को हम कम करें। एज फार एज पॉसिबल या एज पॉसिबल है बी should use alternative things. For example, we should use other things
on the place of timber. नेक्स्ट जो है रिसाइकलिंग, नेक्स्ट मेजर्स इज रिसाइकलिंग फॉर कंजर्विंग रिसोर्सेज. जो रिसाइकलिंग मेथड शुड बी एडॉप्टेड. Here recycling means through the process of smelting we can conserve iron ore like resources and other metallic resources through recycling method. Next है reusing. Reusing is also a prominent measures for conserving resources. For conserving resources, as possible we should reuse any resources. Like we should use scrap iron for conserving iron or minerals. Resource conservation. Under resource conservation, here there is a strategy sustainable development. Under resource conservation, there is a strategy, one strategy, sustainable development. Here sustainable development means सतत पोषणीय विकास. सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कॉल्ड सतत पोषणीय विकास इन हिंदी. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अर्थ होता है, हम लोग विकास करेंगे लेकिन ये जो विकास को हम अपने रिसोर्स को अगले पीढ़ी को बचाते हुए करना है. यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट is such type of development under which development with care for future generation or without damaging resources. Sustainable development का मतलब है कि रिसोर्स को बिना क्षति पहुंचाए हुए ही हमें विकास करना है. तो दिस टाइप स्ट्रेटजी को हम, या इस तरह की जो स्ट्रेटजी जो है, रणनीति जो बनाया जाता है कंजर्व करने के लिए, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. इन दिस वे दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड.